अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। न्यू मॉम शेनानिगंस में एक बार फिर आपका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ सेमोलिना पुडिंग। दिस इज़ 1 tablespoon देसी घी विच यू कैन सी बट इज इन हेयर सिजल। अब मैं इसमें सूजी डालूँगी। सूजी को आपने पहले से भी सीव करके रख सकते हैं इन एनी कंटेनर। मैंने नहीं रखी है, सो आई एम डूइंग दिस राइट नाउ। गंदी भी नहीं है वैसे। अब मैं इसको सीव कर लूँगी एंड देन आई विल शो यू। ओके गाइस, दिस इज हाउ इट इज। इट्स जस्ट घी एंड सूजी। मैं भी बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ और हल्का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सूजी और ये मैंने सूजी गिराई है। इसको बस मैं थोड़ी देर इसमें भूनूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिकॉज ऑफ द होम मेड देसी घी। मैंने नहीं बनाया बाय द वे, आई एम नॉट दैट शुगर। मुझे आता भी नहीं है, मेरे खालू ने बनाया है और बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, मतलब वाओ। अदरवाइज़ मेरे पास ये एडम्स का था देसी घी, उसमें से नहीं आती थी ऐसे खुशबू, इसमें से बहुत अच्छी आ रही है। चलिए जी, अब इसमें मैं मिल्क डालूँगी। आई विल कम बैक। Okay guys, I have added half a cup of milk here and I am continuously stirring it to avoid any lumps. It's better if you use a wooden spoon or a plastic spatula, a silicone spatula, because that won't give you any marks on the utensil. But I was using this spoon because I was in a hurry. So in a while it would look something like this. It would have a pasty kind of consistency. I added some more water to it as well. You can do the same. I'm making it for Amal and she is 1+ years old now. You can hear her in the background. You can use the same recipe to make pudding to wean off a baby. Matlab at around 4 months or 6 months, whenever you're weaning off the baby, you can use the same pudding. However, the consistency has to be really watery for that, so you can add water accordingly. Otherwise, at this stage it is ready to be fed and you just have to cool it down and serve it and let the baby enjoy. Thank you for watching. I hope you liked it and I hope it helped. Stay connected and subscribe to my channel. I'll come back on Friday now. Take care. Allah Hafiz.